नमस्कार दोस्तों, आज फिर से जुड़ गया हूँ रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज का अगला पड़ाव चलने के लिए। बहुत सारे एपिसोड हमने कवर कर लिए हैं और मेरा ये मानना है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। वही हमें रिस्क मैनेजमेंट आसानी से सिखा देती है, लेकिन हम कई बार सीखते नहीं हैं। मैं आज एक बिल्कुल वेग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वेग इसलिए है कि उसमें ये जो जिस रिस्क की मैं बात करने वाला हूं उसमें एस्टिमेशन, प्रोविजनिंग, इवैल्यूएशन बहुत डिफिकल्ट है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मार्केट रिस्क दैट द banker has to face. Banker faces day in and day out. We face market risk, but then we don't know how to proactively manage and control it. We also do not have a standardized product base where under the market risk could be arrested. And urban cooperative banks are per se exposed to the market risk daily because of the vulnerability they possess, because of the rumor mongering risk that they possess, because of the drop of the hat starting of a run, the kind of situation that they possess. You can't control it. You can't control it. And in today's world, what has happened, let me tell you. In today's world, the social media communication has virtually created a threat for the survival and existence. I have always quoted one thing very strongly every time. Silicon Valley Bank, which went down the drain last year in February 22, it would not have gone in such a fast manner. That is, within 48 hours, bank was burst. It went down simply because of WhatsApp, the news spreading on WhatsApp. And we do not have a strategy to face this kind of risk. जैसे कि छोटे टाउनशिप में जब किसी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में रूमर्स फैलने लगती है, हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हम लोग वो टिपिकली रिजर्व बैंक का जो एडवाइस है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान करो, या फिर आप कैश फ्लो रन आता है तो कैश फ्लो कैसे मैनेज करोगे, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में रहती है। एंड देन आई हैव सीन कपल ऑफ बैंक्स व्हिच आर addressing the market risk in a totally different way. For example, हमें अब आदत हो गई है रिजर्व बैंक के पेनल्टी की। 3 साल पहले, 4 साल पहले ये नहीं थी। तो आई हैव सीन मेनी बैंक्स once they are penalized coming out with press release, coming out with videos which are spread on the YouTube and all such mechanisms, making the explanation of the bank viral. मेरा खुद का मानना है ये करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह ये है, यू कैन नॉट डिफेंड एन एरर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब पेनल्टी करती है तब एरर एस्टैब्लिश करने की बात करती है। एडमिट, सिंपल, बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट, एडमिट। कोई मेंबर आपको पूछने वाला नहीं है। तो हम जब मार्केट रिस्क के बारे में बात करते हैं, वो ऐसी हेजी चीजें सामने आती है कि हमें क्या करना चाहिए कि हम मार्केट रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे, इस जिंदगी में नहीं कर पाओगे। लेकिन यू कैन हैव सम मैकेनिज्म डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर बैंक, योर बिजनेस स्टाइल्स। जितना आपके बैंक का बेस बड़ा है, जैसे कि आप एक स्टेट के 10 जिलों में हो, आप 4 स्टेट में हो, आप एक ही जिले के 15 गांव में हो स्प्रेड। Despite having digital communication, if you have a base that is spread in different regions, you are in a better position to manage the market risk. Normally, market risk किसे कहा जाता है? Normally, in banking parlance, the events which are happening into the market and its impact on your bank's balance sheet. अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे 2016 में डिमोनेटाइजेशन हो गया। 3 महीने आपने किस तरह से बैंकिंग किया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। आपके पास कोई सुविधा नहीं थी कि ये कैश मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। ना आपने सोचा था, ना आपने प्लान किया था। मैनेज किया आपने। सोचो आपने कैसे मैनेज किया। और फिर
Many DCCBs could not remit money to the Reserve Bank of India. In fact, Reserve Bank of India refused to accept the 500 and 1000 rupees note from these banks simply because they did not have proper KYC. They did not have track of the accounts, and suddenly 200 रुपये बैलेंस रहने वाला अकाउंट के अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए, 20 लाख रुपए आ गए. रिजर्व बैंक कैसे ट्रस्ट करेगी? दिस इज मार्केट रिस्क. So events which are happening around you while doing banking, you need to have a straight alertness for the events which are happening. रेगुलेटर कई बार तुम्हारे लिए मार्केट रिस्क क्रिएट कर देता है. कैसे? अभी ये रिसेंटली एक सर्कुलर आया, आप जानते होंगे, रीसेटिंग ऑफ फ्लोटिंग रेट्स. इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है. आपने कभी सोचा नहीं था कि वो रेगुलेटरी पैरामीटर्स में आ जाएगा. अगर आप दिसंबर तक वो रीसेटिंग ऑफ फ्लोटिंग रेट्स नहीं करते हो, यू आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टीज. व्हाट इज द डिफिकल्टी यू आर गोइंग टू फेस? यू possibly your clients would leave you. Your clients would leave you because they have the knowledge now. And since they have the knowledge, this is the event that is impacting the urban cooperative banking market. उनके मार्केट पे हल्ला हो गया. सॉरी. कल जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ चेंजेस करती है तो वो रेगुलेटरी रिस्क में आता है, लेकिन मार्केट रिस्क में भी इंपैक्ट करता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट. कल जाके सडनली रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए या फिर इंटरेस्ट रेट कम कर दिए. मार्केट भूचाल आ गया मार्केट में. तुम्हारी तो कोई तैयारी है ही नहीं. तुम्हारी तैयारी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम तुम्हारी बैलेंस शीट का एनालिसिस करने के बाद व्हाट इफ सिनेरियो पे हर क्वार्टर में काम नहीं करते हो. आप स्ट्रेस टेस्ट नहीं करते हो. स्ट्रेस टेस्ट रिजर्व बैंक ने करने के लिए क्यों कहा है? कि ऐसा कोई इवेंट हुआ जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो इवेंट कंट्रोल में नहीं है उसका इंपैक्ट आपको विजुअलाइज करना है, और वो विजुअलाइज करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से मार्केट रिस्क कवर करोगे. एक मिनट जरा. और मेरा ये खुद का मानना है कि market risk is embedded into every risk, whether it is liquidity, interest rate, commodity prices, equity prices. Every risk has an element of market risk, because the market forces which are playing, including the basic fundamental principle of supply and demand, you have a market risk. For example, अभी recently 2000 रुपए के नोट रिजर्व बैंक collected back. What has happened? Deposits went up. Bank should have made money. डिसीजन आ गया कि 2000 रुपीज का नोट आगे जाके कैंसिल होने वाला है या जो भी है. तो people they were rushing to deposit 2000 rupees notes with you. You were supposed to give it back to Reserve Bank of India, and there was no time as such. तो मतलब ये हो गया कि बैंकों के डिपॉजिट बढ़ गए हैं. What was the risk management technique here? The risk management technique was to reduce the rates of deposit. Just check up whether your bank did that. Your bank has not done that, because we are virtually low on responses, and we have to be a step ahead of what is happening into the market. Inflation कम नहीं हो रहा है. Inflation, Reserve Bank of India कम नहीं कर पा रही है. They have admitted several factors are responsible for that. Israel-Hamas war, Ukraine war, you have crisis of oil supply. These events which are happening around you do impact the interest rate scenario. The moment interest rates are impacted, your balance sheet gets impacted very effectively. And nowadays you will find that there is some political event, the stock exchange goes up. I mean, there is a common theorem. When stock exchange goes up, the money gets diverted from bond market to stock market. When stock market is down, stock market money comes to the bond market. So any risk factor
इज एम्बेडेड इनटू एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूं कि आपके ट्रेजरी में, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में क्रेडिट रिस्क है, if I say this, how will you react? There is a credit risk. What is a credit risk? We have been talking about credit risk. For example, if you buy a non-SLR, what are the guidelines of Reserve Bank of India? Reserve Bank of India guidelines are such that you do invest in non-SLR by doing a financial appraisal. As if it's a credit proposal. वो करने के बाद में आपको ट्रेजरी की क्रेडिट रिस्क आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। तो मार्केट रिस्क के बारे में स्ट्रेट में मैंने बहुत कुछ बताया, कुछ भी नहीं बताया। इसकी वजह यही है, इसकी वजह सिंपली ये है कि मार्केट रिस्क कैन नॉट बी डिफाइंड and then there is always less preparedness. So what you need to do is that you have to visualize various scenarios of what is happening in the market or what is likely to happen in the market. वो likely scenarios के impact तुम्हारे बैलेंस शीट पे क्या आने वाले हैं, ये आपको इवेल्युएट करना है। अगर वो इम्पैक्ट आप एनालाइज कर पाओगे तो बात अलग हो जाती है। कल जाके रिजर्व बैंक ने बोल दिया कि हम सब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एक कॉमन सॉफ्टवेयर देने वाले हैं, मान के चलो, और सबको वो कंपल्सरी लेना, एवरीबडी मस्ट बाय द CBS सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड और अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट्स गोइंग टू हैपन? द फर्स्ट इम्पैक्ट विल बी देयर आर मोर देन 200 CBS vendors, they will be out of business. And these 200 vendors have supplied roughly around 200 softwares in 1400 different urban cooperative banks. We'll have to replace them. There is a cost implication, there is performance implication, there is carrying people with the new software is another implication. डिजिटल फुटप्रिंट अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है तो वो कल जाके ये कहने वाली है टू द एंटायर इंडस्ट्री कि सबका सॉफ्टवेयर कॉमन हो, सबका सॉफ्टवेयर एक जैसा हो। अभी जो डेटा की मारामारी हो रही है या MIS की मारामारी हो रही है वो हम संभाल नहीं पा रहे हैं। रिजर्व बैंक चाहती है कि प्लग एंड प्ले, in the sense that it would like to plug a wire which is connected to your server and connected to their server, and they would like to know what the hell your bank is doing. They are already moving towards that. The game of inspection is changing. That's a market risk. The game of inspection tomorrow, 3 या 4 दिन इंस्पेक्टर आएगा क्योंकि वो उसके ऑफिस में बैठ के कैट टूल्स के कैट टूल से एडवांटेज लेके आपका डेटा एनालिस करेगा और वही सवाल पूछेगा जो सिस्टम के हिसाब से बराबर नहीं है। You will be surprised to know that market risk is one such risk which is not discussed much. It exists. It exists. And bankers are not really ready to decide and handle this particular risk. For the simple reason, they cannot read future. To me, it has to be otherwise. Okay, you cannot read future. You can imagine future. Let us look at your own bank. You can imagine where you will be 5 years down the line. The moment you imagine where your bank will be 5 years down the line, you are trying to handle market risk. You are preparing certain soldiers to handle a particular situation. आपके NPA बढ़ गए, आपने बड़ी मेहनत से उनको कम कर दिया, फिर से बढ़ेंगे तो क्या? तैयारी नहीं करते हम लोग। मार्केट रिस्क, एंड मार्केट इज वेरी क्रूअल, इट्स वेरी क्रूअल, इट डजंट give you a second chance. And therefore, as far as market risk is concerned, analyze your entire balance sheet. Sorry. Pinpoint the areas where you feel that something unknown will hit you. Have anticipation, have a strategy. There are market risk theory books, a lot of theory books are there, but nobody gives you practically what is required to be done. So what I'm trying to tell you is that create a balance sheet scenario which already exists, and then visualize 4 or 5 scenarios. If this happens, what will happen to me? If this happens, what will happen to me? And then convert that into numbers. You get to know the possible profit scenario or possible loss scenario. कल जाके तुम्हारा जो अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी है वो चेंज होने वाला है।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका अगर अकाउंटिंग, आप तो अभी हिस्टोरिकल अकाउंटिंग करते हो, IFRS पे आप चले गए तो क्या होगा? उसमें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। क्या है? सिंपल, आपको डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन दोनों बुक करने अकाउंट्स में। देयर इज नो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। आज के दिन आज का अकाउंट, देयर इज नो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। डेवलपिंग कंट्रीज में IFRS आ गया, हमारे यहाँ धीरे धीरे बैकडोर से आ रहा है, धीरे धीरे। और धीरे धीरे बैकडोर से कैसे आ रहा है? वो 2021 का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर नॉर्म आप देखो, उसमें कम से कम 12 या 15 पॉइंट्स ऐसे हैं। They give you hints on the IFRS that is likely to be introduced, and we are not ready. We have to be ready for that. So market risk is something you have to constantly study, constantly evaluate, and then prepare yourself for an event which may or may not happen. If it happens, what? If it doesn't happen, what? This is what you have to do. So market risk loosely is a concept where डर का माहौल हर जगह पे, डर, बट दैट विल सेव योर इंस्टीट्यूशन। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे YouTube वीडियो पे कमेंट करते हो, अच्छे कमेंट करते हो, बुरे भी करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज प्लेस योर criticisms also, even publicly you can criticize me। अगर आपको मेरे विचार और सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।